he was a great man, agreed. I still remember those days. तांकर टाइम पीरियड रे तांकर मिनिस्ट्रीज करा इंडिपेंडेंटली बिहेव करथले. एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री गुडाए काम करे दिएनी. Despite of the fact जदि पीएम चाहिला पर भी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री गुडाए डेवलपमेंटल काम करे दो नथिला. Which is now under that of the Modi government or that of the Indira Gandhi government. Forget central government, even the state government cannot do things against the wish of the central government. So a centralized tendency जब थी वो हमें present day रे ताको बुझिया पाएं कि चेष्टा करूँ. That's it. ताले provinces गरा सब कौन ही कराइबे ना बांधी ही कराइबे. In short, clear? जत्ता बड़े kinghood थिला किंग मझिरे जदि पावरफुल है बसिबो ताहले प्रोविंसेस ताको फॉलो करिवे एल से माने इंडिपेंडेंट हे जिवे. बुझौची माने मौर्यन किंगडम रो पॉलिटिकल बाउंड्री चेंज हे जिवो किबा कमी कमी जिवो किबा श्रिंक हे जिवो से जाकी मोर और लेस गंगा वैली पाखर ही बसिबो पोस्ट अशोकन फेज बिकॉज़ द सक्सेसर्स वर वीक. बुझला विराट बड़ हेची up to that of the parts of Central Asia and West Asia आडू से जाइची. Hence western part to से weak हे के आसीबो किबा भांगी भांगी आसीबो gradually disintegrate हबो. ता माने नुह कि मौर्यन्स नथिले कारण कैपिटल टा फॉल हेनी. मौर्यन स्टेट अछि किंतु तारा पॉलिटिकल बाउंड्री श्रिंक हे के जाउची. ग्रेजुअली से आसी के गंगा वैली पाखरे बहुत कम जगह रहिबो. सेतले पुष्यमित्र शुंग आसी कि will take up the throne. In the hence Sunga dynasty will come into picture. So the first point is the successors of the Ashoka were not very capable, rather were weak. That will lead to the disintegration of that of the Mauryan Empire. This is the first point and the most valid point. Second point is this Brahminical reaction. Brahminical reaction माने like this. हमें देखिथिबो priestly class मानकर demand. Priestly class मानकर demand religious festival time रे. I hope you have seen. For example, सरस्वती पूजा है गला, गणेश पूजा है गला, ईद है गला, and others. ए टाइम रे तमे जतले गोटे ब्राह्मण खोजु गोटे प्रिस्टली क्लास खोजु तमु से टाइम रे मिली बेनी. जेते रिचुअल्स बढ़िवो ब्राह्मणिकल क्लास और प्रिस्टली क्लास करो सेति की डिमांड बढ़िवो. तेनु करी as Ashoka was following, understand properly, as Ashoka was following Buddhism which was against ritualism, the Brahminical influence will decline, their economic capability will shrink up. But this Brahminical section or this priestly class section or Brahminical section, where the section who used to study has got the control on that of the education, so administration चले पे कि educated लोग को दरकार है. Thus you just cannot avoid them. You have to keep them with you. तो हमारा king Buddhism follow करते हैं पारे, masses follow करते हैं पारंती. But the Brahminical dominance in the court was always there. For example, हमें जब present day रे बुझिया पाएंगे चाहिए. For example, बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) is a party of so-called Dalits and Muslims in Uttar Pradesh. Mayawati. तार core cabinet लोग को more or less सब तक ब्राह्मण. Are you getting what I'm saying? See, राजनीति कला मुस्लिम and दलित votes रे, किंतु administration चले पे ना कोई efficient लोग को दरकार है, पाठ पढ़कर लोग को दरकार है. Thus, तार cabinet जाको लोग को की थिले ना ब्राह्मण थिले. Very recently, efficiency matters everywhere. So, under these circumstances, Ashoka might be following, Buddhism or anything. Say priestly class, educated class, तारी कोड भीतर रुहंती. Still, were the most influential people of the society. जेते बड़े central power टा weak हवो, एमना कौन करिवे? Reaction देखा start करिवे. Reactionary thought process गोटे आसियो कोठी society भीतर. First point. First sub point within this. Buddhism gradually dark phase को भी जीवो. सेथरे भी odds आसियो. They will become more or less equivalent to that of the Brahminism. तेणु करी सेथरे भी expectation हबो. Brahminical thought process जेमती अशोका मरीची, Buddhism भितरे odds पस्ची, similar to time for the Brahminism to re-establish itself.
Hence, it will get re-established. The next dynasty is Sunga dynasty. Pushyamitra Sunga will kill Brihadratha. Thus, the Sungas were Brahmins. Tapare Kanwas asive. These Kanwas were also Brahmins. They gave a reaction. Why? Because of Buddhism. Ritualism hei paru nathila. Ashoka chali gale. Tanko successors mane weak he gale. Yanko tanko scope milla reaction dabar. Hence, revolt karibar. Hence, Brahminical reaction jogu Pushyamitra Sunga will come into picture. Buji pallu na you want me to repeat? Arpit? Yes, sir. Yes, sir. Buji. Priti? Yes, sir. Yes, Bujhela. sir. Priti? Got it Buji, right? sir. Brahminical reaction. See, all this is normal politics. Jodi Indian politics research or taken honestly, you can see the similar things exactly like that of the Bahujan Samajwadi Party, BSP, right? And others also like SP, Samajwadi Party, again Uttar Pradesh. Odisha politics are more take a common knowledge, so I cannot say it from here, right? The next point for the decline of that of Mauryan is the financial crisis. This is the highest point. Financial crisis mane mu tom kon koitili Ashoka dhamma ghosha kala sabu kala, but largest army of the world maintain kala tonka darkar na, largest bureaucracy maintain kala, huge army and payment to the bureaucracy was immense. Chanakya time re mane pudchi, Chanakya time re state revenue develop karuthula, emane se kam Buddhism spread kala, Buddhist monks mano ki ye bahut land free re dala, various lands, big patches of lands. Now these monks in the due process of time will become zamindars, kind of zamindars, will lead to rise of feudalism. Just wait and watch. Bahut bada land kon dala, monks ko dala. Monks man tote monks setebale habu jetebale this worldly affair ko tu kon korthu chhadi deithu, worldly affair tu କିଛି ନଥିବୁ ତତେ ତୋ ପାଇଁ କି ପ୍ରପର୍ଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେମିତି ଫ୍ରିରେ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ out of their greed they become monks, Buddhist monks. They used to go to kings or to the governors, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା land ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ financial crisis ପଡିଲା. In the sense କେମିତି financial crisis, land ଦେଇଦେଲେ financial crisis କେମିତି ଆସିବ, because agriculture based society, land tax, land revenue was the highest income. Tu jodi land taku dan re dei douchu, acres and acres, hectares and hectares, villages and villages jodi dei douchu, etu revenue ta collect hei pariboni na. Hence when big patches of lands were given, huge army was there, huge bureaucracy was there, huge system was there, taku maintain kare pai tonka darkare, state nije revenue create kari paruni. Buddhism jogu, non-violence jogu, se suppress bhi kari parni masses ku. Thus, gradually, the Mauryans will become bankrupt. Their control on that of the provinces will decline. In the due process, they cannot pay the salaries. The disintegration was inevitable. Financial crisis. Ujala? Sir, the disintegration process बुझी हेलानी sir, disintegration कौन सा होतले? अरे Mauryans decline करचंदी इने, Mauryans decline करे एरा सब आमे कोन देखछु ना कारण देखछु. प्रथम कारण आमे देखिलु अशोका को मरिगला पारे, चाली गला पारे ताकर जो सक्सेसर्स माने आसले से माने वीक थिले, संभाली पारलेनी. सेंट्रलाइज्ड पावर वीक हेले प्रोविंशियल पावर वाला स्ट्रांग ही जिवे. आ प्रोविंस वाला सबले चेष्टा करिवे ओटे इंडिपेंडेंट कंट्री होबा कु, जेमिति इंडिया रे इने जस्ट फ्यू इयर्स बैक कश्मीर कहउथला हम इंडिपेंडेंट हे जु, हम क्या चाहते हैं आजादी, त माने कोन few years back Nagaland was wishing, 1960s re Tamils were wishing, not Tamils, Tamil Nadu government was wishing, or the politicians were wishing centralized. So it is a gift of a great man named as Ambedkar
or the founding fathers of the constitution who has made the central government or center to be powerful over the states that has led to किंबा बहुत disintegrating forces अच्छी आज भी इंडिया भितर बहुत अच्छी. Similarly, if you go to back to those days, जब centralized power जब weak है जीवो, ताले provinces strong है कि बाहरी जीवे, जहाँ की हेला. अशोकांकर किए Successors, ताको पिला छुआ, आगु जो माने हेले, ता पिला and all. ସେମାନେ efficient नथिले like अशोका. हेई भी परिवनी. तमु गुडा जिंस फ्री रे मिली गले तमे दुनिया देखि परिवनी, जानि परिवनी. अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, Rahul Gandhi, Jawaharlal Nehru. Difference is there. Getting what I'm saying? Apart from that, Ashoka कहते कि भाई सुना पिला मानु कहते ना कौन तमे aggression करिवनी, violence करिवनी, दरकार नहीं. Hence they will become pacified. Thus central tendency weak है जीवो, provincial tendency strong है जीवो. Provinces निज निज को independent बोली घोषित करि देवे. सेंटर पाखे ताकत नहीं कि ताकू बांधी रख परियो. 1960s रे कहउथिले few of the Tamilians, not all Tamils. Tamils are our own people. कहउथिले we want a separate state, Tamilelam. Lal Bahadur Shastri was there. He sent Indian Army. Rest is history. Center powerful darkar hai. This is first point. Getting with it. Yes, sir. Second point is financial crisis. जोटा आमे कहलु एत बड़ा आर्मी अछि, एत बड़ा ब्यूरोक्रेसी अछि, टका कोठ आसीबो? टका आसला कोठु? लैंड रेवेन्यू. लैंड को कोन करदिले? गिफ्ट दे दिले माने. का को ना बुद्धिस्ट मॉन्क्स को. बुद्धिस्ट मानकर मॉन्क्स मानकर संख्या बढ़ी गला ना काहे कि ना फ्री फूड हमको मिलुची. मते ने जदी की कहबो तू ओटे you become a monk, you will get 100 hectares. Tomorrow morning I'll become a monk. What's the big deal? मु आके क्लास ने भी यार जी साजी काय करियो जे मत जदी पूरा मोनास्ट्री दिया होची, टंका पत्र दिया होची, खाक बहु दिया होची, जमी भी दिया जाउची, जमींदार भी हे गेली, टंका भी हे गेला. काली सकाळ उठले मु आ सारे कि नहीं मंक हे गीच. बहुत मंक बढ़ी गले. ये देई चलला, देवाले हे गले. Hence bankrupt, financial crisis. टंका नहीं, आर्मी मेंटेन कर परिबेनी, रहिलानी. बाहर के हमर अरे स्टेट्स प्रोविंसेस पावरफुल हे गले. सेमाने कोन गले इंडिपेंडेंट निजो को घोषित कर देले. ये जाकी अटके पले. डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. सेकंड पॉइंट बुझला सर सेते बेले किछि फिक्स्ड लैंड टैक्स थिला कि लैंड रेवेन्यू टैक्स जोटा फिक्स्ड थिला. मोर और लेस एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थिला. यस एग्रीकल्चरल बेस्ड थिला सोसाइटी. एग्रीकल्चर रु किछि रेवेन्यू तो आसीबो ना स्टेट को ना नहीं. आगे सर जो आसीबो किंतु जो लैंड ता तुमको दिया हे गला सेटा से मंक रह गला, सेठो किछि आसीबोनी, सरी गला. और जते बेले गोटे लैंड दिया होची ताकू फर्टाइल लैंड ही तो दिया हो ना. Not useless lands will be given, fertile lands have been given. yes Revenue will decline. Gradually things will collapse. Third point is Brahminical reaction. Ritual ब्राह्मण मान को priestly class को बंचिया पई कि rituals दरकार. एमती करा सेमती करा पानी एठी पका या हबो ते हबो दिस दैट एंड ऑल. बुद्धिज्म सब जिंस मना कर दला. तला हबनी. ब्राह्मण मान को सोर्स ऑफ इनकम कमी होला. मोरलेस इट इज priestly class. ब्राह्मण कहूची कारण एमती बुक लिखाई छी. इट इज ट्रूली priestly class. कमी होला. एने से माने रिएक्शन देबे. ऑल थिंग्स आर लिंक्ड. अशोका नाही सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी वीक ही जाईची. ब्राह्मण माने ही रिएक्शन देबे. नेक्स्ट डायनेस्टी आसीबो सुंग डायनेस्टी. सुंगस आर ब्राह्मण्स. तापर आसीबो कन्वा डायनेस्टी. कन्वास आर ब्राह्मण्स. बुझला getting Riti? yes sir मन पका मगधर पावर, the power of Magadhs.
तार गोटे मेजर पॉइंट थिला मगधर पावर माने मगध माने झारखंड बिहार जोनटा मोरलेस तार गोटे मेजर रीजन थिला ताको पाखरे आयरन अछि अवंती रो भी गोटे मेजर रीजन थिला एमपी जगहटा अवंती ताको पाखरे आयरन ओर अछि द सेम मगधन एम्पायर will grow to become Mauryan Empire, right? Think practically. पूरा Mauryan Empire ही अच्छी कलिंग ता भीतर अच्छी खाली डीप साउथ का तले नहीं चेरा चुलस पंड्या जोटा पूरा तले आसीबो से पार्ट ता नहीं नॉले रेस्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट रो किछि पार्ट नहीं किबा अप टू दैट ऑफ द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया विराट बड़ जगह रे माने कोन करचंदी रूल करी बस जेतले तांकरी किंगडम ता एटा सबुआडे ताकर आर्मी ठिया होची लुहा तो नहीं कि जीवे ना आर्म्स तो नहीं कि जीवे ना मेटलर्जी रो नॉलेज बाहर को जीवो ना सो इट विल नॉट जस्ट बी confined within that Magad zone rather will spread throughout their political boundary iron जो ताको पाखरे ओटे एज थिला हेंज सेटा आउ रहिबनी तमे खाली वीक हे जीवार अछि सेंट्रलाइज टेंडेंसी वीक हे गला रेस्ट ऑफ द लोकों पाखरे भी आयरन वेपन्स अछि टूल्स अछि वेपन्स अछि समान भी लढी परिबे समान लढिले आ याकर पॉलिटिकल बाउंड्री श्रिंक हे कि गला मौर्यंस डिक्लाइन करी गले बुझला if you want me to go slow I can go slow अर्पित ना सर ठीक अछि iron tools next the worst part of this I hope you map देखितली Indian subcontinent भितर जदि पसिया अछि then it is only through the northwestern frontier passes बुझ परछु northwestern frontier passes ऊपरे हिमालय अछि नॉर्थ ईस्ट रे फॉरेस्टेड माउंटेन अगेन हिमालयज अछि साउथ आउ ईस्ट वेस्ट रे अछि ओशन एठी डेजर्ट अछि छोटिया पार्ट रे रहिला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे जोठी माउंटेन पासेस थ्रू रे तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट भितर पसि परिबू जो किंग से माउंटेन पासेस को सिक्योर करके रखिला से चक्रवर्ती हो माने से इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऊपर रूल करियो नॉर्थ वेस्टर्न पासेस को जे गार्ड कर दबो से ही को करिवो ना बंचिवो अशोका से पार्ट को गार्ड कर देथिला you want me to show that on map or you are in a position to understand it map रे देखिबे ना बुझ परछु yes sir बुझिला बुझला तो रिएक्शन दो ना तो देख let me share screen ना hopefully you remember this हिमालय नॉर्थ टू तमे पस परिवनी हिमालय फॉरेस्टेड माउंटेन नॉर्थ ईस्ट पस परिवनी एतक पानी ओशन पस परिवनी इसेड डेजर्ट पस परिवनी एठी एटा भी एमटी के हे के अछि एई पटे ही पस परिव दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न passes the king who will safeguard this pass will rule this subcontinent मुगल सेटा को सेफगार्ड कर देबे बुझौछि मुगल्स का पूर्वरु के सेफगार्ड करछि से होछनि मौर्यंस ता छडा आ मोर और लेस कहीं करनांती until British will come into picture British will control the whole world forget the subcontinent it's a small thing for them under these circumstances one of the major factors is both Ashokan kings hence we'll see the post-modern cycles. बुझेला इतो समझले safeguard करि परिबे नि apart from that how would you say now
इन्हें ठीक है देखें, just go to your map, go to your home and check it out. This is India, Jammu Kashmir. এটা হচ্ছে আফগানিস্তান, এটি ধরো হচ্ছে গান্ধার, এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আফগানিস্তান ভিতরে ହେଲା, এটি পড়ে আসিব এটা হচ্ছে ইরান যোনটা হোপফুলি এটি ଗୋଟେ টাইপ ଥିଲା ତା নাম হচ্ছে পার্থিয়ান্স হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, ये হচ্ছে ইন্ডিয়া, आवर ओन इंडिया। এটি মু পসিবলি কোউটি আফগানিস্তান ভিতরে উপর দিকে এটা হবো, এটা হচ্ছে গান্ধার, তা উপরে আর দিকে ব্যাকটেরিয়া, পাকিস্তান ক্রস করকে এপটু আসিবি এটা হচ্ছে পার্থিয়ান্স। এটি বুঝি হচ্ছে উপরে হচ্ছে চাইনা। এইনে কম করিব, getting remember this map, this is India. If you go to Atlas, you will come to see upar টিকে আছে উপরে বাটা গান্ধার, তা উপরে একটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ান্স, তা উপরে একটা জায়গা তা পাশে অଛନ୍ତି কি না পার্থিয়ান্স। এসব ট্রাইবস মানে কোন না গ্রুপস অফ পিপল, নর্মালি ট্রাইবস আর মোর অর লেস রাইট। ইয়াকো উপরে এইটি সিথিয়ান্স অଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ দে আর সিথিয়ান্স এটা হচ্ছে চাইনা, চাইনা তারা বনেব গ্রেট ওয়াল অফ চাইনা, উইল জাস্ট ডু দ্যাট। সিথিয়ান ট্রাইবস মানে সিথিয়ান ট্রাইবস চাইনা উপরে অ্যাটাক করନ୍ତି, hence their king will build a great wall of China to safeguard from that of the Scythians. Scythians तापरे Bactrians ମାନଙ୍କୁ अटैक करिवे, Scythians तापरे Parthians ମାନଙ୍କୁ अटैक करिवे। ସେମାନେ ମାଡ ଖାଇକି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପାସେସ୍ ପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ। Hence Bactrian invasions is next, Parthians will next, Scythians ଦେଖିବେ ଏମାନେ ଯଦି ସେଠି ଯାଇକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, Scythians ମାନେ ବି ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ବୁଝିଲା କଣ କହୁଛି? ବୁଝିଲା? or you want me to repeat? Yes, sir. बुझिएला। इंडिया अफगानिस्तान ভিতরে গান্ধার জাস্ট মনে রাখো, উপরে ব্যাকটেরিয়ান্স আফগানিস্তান ভিতরে এটা হচ্ছে ইরানটা পার্থিয়ান্স, এসব ট্রাইবস ହେଲା, পার্থিয়ান ট্রাইব, ব্যাকটেরিয়ান ট্রাইব, তা উপরে ଆଉ ଗୋଟେ ট্রাইব ରହୁଛି সিথিয়াନ୍ସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ୍ ট্রাইব। ସେଟା ସେ କଣ କରୁଛି, ଏଠି ଚାଇନିଜ वाला ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ସ ଅଫ ଚାଇନା, ସେ ତା ଭିତରେ ବସିକି ଲୁଟମାର କରିପାରୁନି, ମାରି ପାରୁନି, ତେଣୁକରି ସିଏ ମାରୁଛି କାହାକୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ସ କୁ ଆଉ ପାର୍ଥିଆନ୍ସ କୁ। ମାଡ ଖାଇକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିଆନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିଥିଆନ୍ସ ବି ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାରିବେ। we'll see that story. getting ବୁଝିଲା? Chinese ruler Wang Shi, and also Wang Shi constructed Great Wall of China to shield its empire from the Scythians. I hope that getting on the map. Scythians, Central Asia part में बहुत ही तो भाव है, just imagine पूरा Central Asia up to Black Sea. China रू start करे map पर देखते कि जहाँ Black Sea है, माने all that big part Scythians used to stay, right? ସେମାନେ ଆସିବେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ସ କୁ ମାରିବେ, ପାର୍ଥିଆନ୍ସ କୁ ମାରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ସ ପାର୍ଥିଆନ୍ସ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଇନଭେଜନ କରିବେ। ତାପରେ ଭାବେ ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇନଭେଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପାସେସ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଇନଭେଡ କରିବେ। ସେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପାସେସ୍ କୁ ମୌर्यन्स ମାନେ ୱିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଜି ପାସ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। All these things have been seen by a man named as Pushyamitra Sunga. Sunga was the general of last Mauryan king Brihadartha. Hence, he will kill Brihadartha in public and will come to throne in Patna. Patna was the capital. Patna is king is here. Thus, Sunga dynasty will come into picture. Sungas happen to be Brahmins.
another concept started. Now the Sungas, they तू ଯେତେବେଳେ ପାୱାର କୁ ଅସର କରୁଛୁ ଗୋଟେ coup କରୁଛୁ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ କୁ ମାରିକି ତୁ କିଙ୍ଗ ହଉଛୁ it is not an easy task ତୁ ସେତିକି ଲୋକକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଛୁ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ତୁ ତାପରେ କନସେସନ ଦବୁ ସେତିକି ଫୋର୍ସ ତୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ତତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି କିଙ୍ଗ ହଉଛୁ ତୁ ଯାଇକି ମାଗଣାରେ ବସିପାରିବୁନି ସେମାନଙ୍କ ନିଡ୍ସ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବୁ Pushyamitra Sunga or Sunga, Pushyamitra Sunga happened to be a Brahmin. He was in a position to take concession from the powerful Brahmins in the court of Ashoka or the Mauryans. ତେଣୁକରି ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ thought process କୁ satisfy କରିବା ତାକୁ ପଡିବ thus Sungas will re-establish Brahminical thought process again back on the Mauryan soil. बुझला बुझला सतबत Yes, sir. Yes, sir. किंग ଯେତେବେଳେ ତୁ ହବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିଛୁ ନା ନିଜକୁ ତା ଗୋଟେ ମାରିବୁ ମାରିଲା ପରେ କନସେସନ ତ ଦବୁ ଯାହାକୁ ଯୋଡିଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ହେନ୍ସ କନସେସନ ଦିଆ ହବ ସେ ନିଜକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ thought process ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୋଉଥିରେ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବ ରିଚୁଆଲିଜମ ଚାଲେ ଫେରି ଆସିବ several Vedic sacrifices will come into picture. I hope you still remember the yajnas and other sacrifices. Revival of Brahminical way of life haba, and hence your NCRT will write. So I'm saying this. They will persecute the Buddhists. Buddhist ମାନଙ୍କୁ persecute କରିବେ ବୁଝିଉଛି କହିବା sir what is the proof to it? Proof ହେଉଛି ଆରେ ଏହା Buddhist persecution ହେଇଛି ବୋଲି Buddhist historians ମାନେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି. But there is a but once again. ଆମେ ଆଗରୁ historians ମାନଙ୍କ nature ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ thought process କୁ ଧର Buddhist thought process କୁ ଗୋଟେ king propagate କରୁନି ତାଙ୍କ historians ତାକୁ ଗାଳି ହିଁ କରିଛନ୍ତି. Similarly for that of the Jainas and that of the Brahminical also. Hopefully you are getting what I am saying. As Pushyamitra Sunga will re-establish itself or will re-establish the Brahminical thought process. It was very natural for the Buddhist historians to talk against the Sunga dynasty and the Kanva dynasty. But it is also evidential and within the ambit of the Buddhist history. Buddhist historians माने एया भी लिखिଛନ୍ତି ना कौन there are enough evidence कि Buddhist art से टाइम पे बढ़ी थी Buddhist कहते कि Sungas has persecuted us. किंतु सेई टाइम रे Buddhist art बढ़ी थी. Even the great stupa. I hope you know what is stupa. We have dealt with the stupas. The place of worship. In short, great stupas like Baruch stupa and the Sanchi stupa were re-innovated at their time. Hence, other evidences are there which shows Buddhists were not persecuted. The Buddhist historians cannot be taken seriously. NCRT जोड़ा का जिनस लिखी तू जोड़ा करे कंफ्यूज हबुनी जदि क्वेश्चन पचारिबो बुद्धिस्ट परसिक्यूशन हेछि तू हां मारिबो कारण NCRT लिखा हेछि NCRT तापर जदि पचारिबो बुद्धिस्ट आर्ट बढ़ी छि ना हां स्तूपस रिनोवेट हेछि ना हां जदि हम ट्रूली हिस्ट्री को देखिबा we understand the nature of these historians, the Jaina historians, the Brahminical historians and the Buddhist historians. तांको थॉट प्रोसेस को जो सपोर्ट करछि से खाली ताकू प्रेस करछन्ती अन्य मानको को गाली करछन्ती. In this sense, Buddhists cannot be taken seriously. We will not write this. But no need to get confused in your prelims. Persecution हेछि Buddhist करा ना हां आर्ट बढ़ी छि ना हां जोड़ा को कॉन्ट्राडिक्टेड होछ ना हाउ. You are smart enough to handle. बुझला repeat. Sir, ବୁଝିଲା
जेहेतु मैंने आसचंती ritualism will get re-established. Ashwamedha yajna. Hope you still remember the Ashwamedha yajna. I do not need to repeat. Ashwamedha yajna से पूर्ण हो गए. अभी वे last Sunga ruler was Devabhuti. He was murdered by his minister Vasudeva Kanva. Vasudeva Kanva the Brahmana. When it comes to power, it sees केबे देखिबोनी कास्ट कोन रिलीजन कोन जेंडर कोन से किसी देखिबोनी. पावर गेम इज अ डिफरेंट गेम. से आगुरु ब्राह्मण नारे आस्तिले एइने गोटे ब्राह्मण आ गोटे ब्राह्मण को कोन कला ना मारला. बुझो एटा हुए से हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण को सेमति किछि न थाए. एब्सोल्युटली नथिंग. दिस इज नॉर्मल पावर गेम. इट वाज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, इट विल हैपन इन फ्यूचर आल्सो. Hence Vasudeva Kanva, he was Devabhuti was the last king. He will be killed by his minister Vasudeva Kanva. Kanva dynasty will come into picture. Bit factual part किसी बुझा पाएंगे नहीं. Notes will be given to you. Post Mauryans को जीवा आगुरु हमें गोटे पार्ट छाड़ दे थिलु ना कोन बुझु. मु तुम कहथली अलेक्जेंडर पार्ट टाइम में कोन करथिलु छाड़ देथिलु ना. अलेक्जेंडर आसीबो, चाणक्य आसीबो, धनानंद हारिबो, तापर जे मौर्यंस आसीबो ना. सो हेंस आगुरु सेई नॉर्थ वेस्टर्न पासेस पटु. आई रिपीट, मौर्यंस को पूर्वरु से टाइम में कहबो मौर्यंस को पूर्वरु से नॉर्थ वेस्टर्न पास से पट ही आसीबो. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पासेस पटु इन्वेजन हेई छी. बुझो history says this, and that is practical also. I repeat, Indian subcontinent. I hopefully you are getting on the map. तार नॉर्थ रे होची सेंट्रल एशिया, वेस्ट होची वेस्ट एशिया. सेंट्रल एशिया टा स्टोनी डेजर्ट, वेस्ट एशिया टा सैंडी डेजर्ट. जोड़ा का डेजर्ट बोली तो मौर्यन सब वेस्ट को गले नहीं, कारण वेस्ट होची नहीं. किंतु सेंट्रल एशियंस वेस्ट एशियंस को पाखरे कारण अछि इंडिया रे पसिया को. We are enormously rich culturally, geographically also. We got everything. तेणु को सेमाने पसिबे. Thus Iranians will enter from that of the northwestern passes. I name Mauryan kingdom है नहीं हला. हम एक पार्ट के हमन मिस हेतला. इने मगध किंगडम अछि. मन बाबा रंदर्स मगध किंगडम बस पार मगध 6000 हाथी अछि. दैट पार. किंतु नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पासेस पटे और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पटे मगध परी की स्ट्रांग देश नाही. बरं छोट छोट अछन माजा काम्बोज, गांधार, मद्रास. And they were fighting against each other. They are small principalities and were fighting against each other. Thus they were weak. बाहर गोटे फोर्स आसिले गोटे फोर्स को जदी बाहर आसे के मारुची अन्य फोर्स को चुप रहउछ बिकॉज़ दे आर एनिमीज. ग्रेजुअली ताले से हारी हारी जेबे. फर्स्ट ना, let me tell you this. India is a different concept in the sense India रे जेतले वार हवो वार रे कोन हुए खाली वार रे धर जोड़े प्रिंसिपलिटीज आसे कि लडुछन एक्स एंड वाई. एक्स रा आर्मी आसीबो, वाई रा आर्मी आसीबो. गोटे फील्ड तय हेतिबो, गोटे जगह फिक्स हेतिबो. दिजन आसी से लड़ीबे. बुझियोची माने एक्स रा लोक आसले वाई रा लोक आसले गोटे फील्ड रे कोनला लड़ीले. एक्स कंट्री रो जे सब सिविलियंस ले सी ताको डेली काम करूछन. वाई रो लोक डेली काम कर जे चाष करछि चाष करे को जीवो, ट्रेड करछि ट्रेड करे जीवो. नॉर्मल लाइफ सिंपल अछि, नॉर्मल अछि. धर एक्स ता हारी गला वाई किंग हे जीवो. खाली ताकर कोर्ट फ्लैग का चेंज हो, किंग का चेंज हो. लोकों का लाइफ ऊपर किछ इफेक्ट पड़िबनी. से माने स्लेव हेबेनी, ताको उठेबेनी, ताको मारिबेनी. दिस इज कॉल्ड एज धर्म युद्ध. सिंपल धर्म युद्ध है.
सेंट्रल एशियंस को ए थॉट प्रोसेस नहीं, वेस्ट एशियंस को ए थॉट प्रोसेस नहीं, से माने आसीबे लूट मार करिवे हमको मारिबे, ग्रेजुअली हम भीतर रहिबे, नेक्स्ट जनरेशन आसु आसु से माने आम परिका पाल्टी जिवे, दस फुल्ली इंटीग्रेशन हे जिवो। बुझला को कहली मु Yes, sir. इंडिया रे जोड़े फोर्सेस लड़िबे, खाली आर्मी ही लड़ुची, सेथरे पुणी रूल अछि 1 to 1 लड़ाई हबो, गोटे लोक को 2 जण मारी परिबेनी, सूर्य अस्त होला परे लड़ाई हबनी, जा हबो सूर्य उदय हेले हबो, राति रे तमे डेड बॉडी नहीं पारिबो, ताकू जळे पारिबो, डेड बॉडी मानको सम्मान दिया हबो, कि जदी मझिरे कि जदी पानी मागुची से पानी भी पी के आसीबो, तेणु करी शंख बाजिला पर युद्ध हबो, ऑल दिस रूल्स धर्म युद्ध इंडिया रही थिला। सेंट्रल एशियन वेस्ट एशियन माने जेतले भीतर भाई बारबारिक क्राइम्स कि जानना आसी मरा कथा करिवे, से तेणु पर हमें हारिबु, हमें धर्म युद्ध करथु, से माने दे विल कम एंड डू देयर ओन नॉनसेंस, बट दे विल कम, they will see the civilization, gradually they will change, ता भीतर हमें बहुत मरी गई, then they will get integrated within this society, thus it is called as the ocean of civilizations। बहुत civilization बाहर आसी एठी आसी पसकी यारे संगे मिसी जाई, rest of the civilizations are rivers, Indic civilization is an ocean where all the rivers came and get merged within the ocean, किंतु ता भितरे हमर बहुत ब्लडशेड हेछि, सिमिलर ब्लडशेड गोटे हबो when Iranians will come and will enter India। यदि तुम माने मूवी देखथिबो और पर्शियंस इरानियन तुम जदि गोटे मूवी देखथिबो 300, हां अच्छा मूवी तुम देखो सेथरे वार चलछि, पर्शियंस वर्सेस ग्रीक्स और स्पार्टन्स व्हाटएवर, पर्शियंस वर्सेस ग्रीक्स से माने एनिमीज। एठी गोटे लोक थिबो ताना थिबो Darius। Darius will annex Punjab and west of Indus, Persian dala ताना होछि Darius will annex Punjab and west of Indus and Sindh, hopefully you are getting on the map, west of Indus Punjab and Sindh, ये एरो बड़ा पार्ट को ऐसे की ऑक्युपाई कर दो इंडियन सबकॉन्टिनेंट भितरे, so that will be the 20th state or satrapy, satrapy or satrapy, that will become the 20th province of the Iranian Empire। बुझियोछि तार सक्सेसर ना होछि जर्सेस, Darius the successor ना होछि जर्सेस। जर्सेस होछि तुम 300 मूवी देखछो गोटे लंबा है कि बड़ लोकटे थिबो दैट विलन, द सेम जर्सेस सी इंडियंस मानो को नै कि लड़ाई थिबो ग्रीक्स को विरुद्ध रे, बिकॉज़ Indians were one of the best warriors of this world, we got enslaved all the time because we were fighting against each other, the way today we are fighting in the name of language in that of the southern states, which is happening now। Whatever might be the case, Darius 20th province करछि west of Indus, Sindh and Punjab, तारा सक्सेसर ना होछि जर्सेस। इंडियंस मानो ने के लड़छि काहे अगेंस्ट रे, ना द ग्रीक्स अगेंस्ट, जेतु ग्रीक्स अगेंस्ट लड़छि इट वाज वेरी नेचुरल, द मैकेडोनियंस और ग्रीक्स इन शॉर्ट will come and will attack काको ना द पर्शियंस, अलेक्जेंडर तापर कोन करियो ना आसीबा गो, and hence Alexander will win, then Alexander will enter India। Under these circumstances use your logic and say जदि इरानियंस इंडिया भितर पसिले ताले तार रिजल्ट कोन होबो, इफेक्ट तार कोन, कॉन्सिक्वेंसेस कोन, रिजल्ट किछि हो न हो गोटे तो होबो ना कोन, इंडो इरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़िबो, जाकि हमें सबले करू इंडो इरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ला। इरानियन इंट्रोड्यूस करिबो गोटे स्क्रिप्ट, इट्स नेम इज खरोस्ती स्क्रिप्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ला, अग्रीड। खरोस्ती स्क्रिप्ट written from right to left, not left to right, हमें लोग left to right, written from right to left,
some of the Ashokan script are also in Kharosthi. Ashoka was a very smart guy. Ashoka या पर आसो Ashoka was a very smart guy. कौन करथिले से ना लोकल लैंग्वेज रे तार ताकर सब कौनथिला स्क्रिप्ट करथिला so that people can understand what the man was saying. Apart from that, एटा हम कल्चर क्लास रे करिवा हमें बनेया कोना पिलर्स Mauryan pillars or Ashoka bell shaped capital has got Iranian influence. Culture class अच्छी छाड़ दे बुझे Greeks कथा मु कहूँ not Iranians. Greeks, Persians, Iranians करो बढ़िया बढ़िया ता पर आसेबो इंडिया एमाने कांटेक्ट अछंती एमाने हम सहित कांटेक्ट आसिले ए कांटेक्ट जो ग्रीक्स वाला जानले कि इंडिया गोटे जगह আছে तांको पारे बहुत टका আছে enormous money this will pull Alexander to come to India. Greeks came to know about the great wealth of India, thus Alexander invaded India. Greeks, Persians or Iranians enemies कांटेक्ट अछंती युद्ध चलछि एमाने पसले या भितरे तापरे हम पाखरे वेल्थ अछि बोली एमाने जानले एमाने को टू ग्रीक्स वाला जानि गेले तापरे ग्रीक्स अलेक्जेंडर आसिला इंडिया भितर पसला ही जस्ट वांट्स टू सी अलेक्जेंडर्स रो हिस्टोरियंस माने कोनती अलेक्जेंडर इच्छा थिला थरे देखिया पय कि दैट इंडिया दा केमि देखिया the place of the Hindu is not a religious term, it's a geographical connotation. I hope we have dealt this in class. ऊपर रहला हिमालय तळे रहला सिंधु सागर से जियोग्राफी भीतर जे रहला आंसर हिंदू all people have been called as Hindus, so hence he just want to see and have the fragrance of the Hindu rashtra, of the Hindu place where Hindu used to live. He just want to see once, hence suppose he comes in India भीतर जदि से इंडिया भीतर पसिबो अलेक्जेंडर ताले को पटे पसिबो सेही नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज देखि पसिबो यदि नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज देखि पसिबो ताकू मेजर प्रथम टक्कर के देला देन इट वाज पोरस I hope you still remember Jhelum and Chenab Indus tributaries Jhelum Chenab भीतर गोटे अछि दोआब माने दोआब means the place or the land between two rivers. दोआब गोटे अछि पोरस kingdom was in between that. पोरस संगे लड़ीची Alexander. Poros was such a small kingdom. Alexander was a big warrior, everything okay, but Indians were one of the best warriors of this planet. तेणु करता Iranians ने कि ताको लड़ौथिले. Poros will give a charming, fight against that of the Alexander कथा मानिची हमें एते कथा केमति जानुचु हमें सब जानुचु Alexander हिस्टोरियंस छु एमानकर गोटे रोग होउची निजर हिस्टोरियंस निजे धरि बुलिबे hence everything we are knowing from that of the Greek history. Hence think practically. Alexander wants to enter India fully. तापर से पोरस संगे लड़ी की जानी गलानी कि इंडियंस नकर माइट रे माने बसछन छोटो किंगडम तार बहुत खेती करी देछि hence now he wants to make Porus his ally और ताको ally कले ही से अन्य किंग को विरुद्ध जाकी लड़ी परिबो hence to make him ally Alexander will become the friend of Porus. This is one of the theory and which makes sense also. Under these circumstances various stories will come into the picture. तापरे Alexander आर्मी कहछि कि हमें आगु को बढ़िबुनी कोन पय कि बढ़िबुनी इंडियन हिस्टोरियंस अलगा गप कहउछन ग्रीक हिस्टोरियंस अलगा कथा कहउछन as we are studying in India we have no other option than to follow NCERT तनु कहि मु कहउछ I will tell you both the stories तार आर्मी बना कहउछन कि हमें आ ईस्ट आड़ को जिबुनी ना काहे कि NCERT लेक्चर किबा इंडियन हिस्टोरियंस एमति कहउछन Greek soldiers had grown war weary and disease stricken. माने बहुत युद्ध कलानी माने हालिया हे गलानी डिजीज हे गलानी तनको से माने आगो को जीवा पाई कि चाहूना
ग्रीक हिस्टोरियंस कहते भाई सेमती किसी नहीं तांकर वार करियाटा होची तांको पई प्राइड हां वार रे मरले से माने हेवन जीवे तनो करी वार पई तांकर सेमती किसी असुविधा तांकर नथिला ग्रीक हिस्टोरियन कहते but we have no other option than to read that of the Indian historians. Second point, Indian looked hot climate of India and 10 years of continuous campaigning. India रे कुआडे hot climate थिला भाई तमे वेस्ट एशिया क्रॉस करी आसलो तमे पर्सिया रे पसिलो तुमको सेठी गरम लागलानी तुमको इंडिया भीतर पसी की हायर एलिवेशन रे जम्मू कश्मीर वाला जोन रे तळको भी टिके हो पंजाब को भी हो सेठी एते भी गरम हुए नहीं दैट टू दोस डेज till then Indians are writing hot climate of India and 10 years of continuous campaigning agree apar kono third point is experience of Indian fighting skills jaki which is true also because Porus have given a mighty fight against the Alexander killing much of his men Greek historians also says that and the final factor is Magadhan Empire in the east Magadha Vasti K na Nanda has got enormous army, has an elephant of 6,000. Rumors will get spread. This coming at this, this that and all. Rumors will get spread कि ताका पर 6,000 हाथी अछि. जेतले 6,000 हाथी चल आसवे ए धरती कौन बना थरियो. Hence, the armed forces of the Alexander were not eager to move ahead. कारणु ताकू डेथ देखा जाउतला. से पोरस संगरे लड़ी की जानी जाइथिले Indian small kingdom is so powerful. What about those mighty Nanda sitting over there? So it will be a suicidal thing for the army to move ahead. The defeat was predestined. Now the Greek historians are saying this. Alexander the Great, the so-called Great, तारा camp रे बसी की कांदुची. Mugoni. Greek historians are saying has got teary eyes आखिरे कोन आसी लुह पळे आसी तार ताकू तार जनरल पचि सर why are you crying देखोची my armed forces my generals my army has made me fallen सिमु ताको जुगाजी हारी गेछि Alexander wants to come and fight army ही जाउने भय करी Indian historians are in no position to write their own glory that's a different thing we have no other option than to read NCERT hence we will write NCERT. First point, Greek soldiers were war-weary and disease-stricken. Second point, hot climate of India and 10 years of continuous campaigning. Third point, experience of Indian fighting skills. Fourth point, the great Magadhan Empire in the east, the mighty great Magadhan Empire in the east. Thus, assuming Alexander, those who wants to conquer the world got defeated, irrespective of his winning in that of the Porus War, the Battle of Hyde Pass, right? तापर भी से हारी जाउची बिना लड़ी की फेरी से जाउची तो से फेरी की जाउची ता टेरिटोरियल पोजीशन को तीन पार्ट से भांग दाओ हेंस गोटोड गवर्नर बसी की से जीवो thus the Greeks will remain in the Indian subcontinent सेठु गोटे ग्रीक रहबो बैक्ट्रियंस जा कि राग था कि हम ने तमको मोने तमको कहउतली राइट Megasthenes, I hope you Seleucus Nicator, Megasthenes, tapor as well. I hopefully these things are getting clear for you. Jala. Yes, sir. Final significance of coming of Alexander. Onla. किछि हो न हो गोटे दिन सता हो भाई ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ियो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस बाय दैट वे ग्रीक मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन इंडिया को आसीबे एंड वाइस वर्सा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ियो ठीक अछि अलेक्जेंडर्स कर हिस्टोरियंस माने इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन देई चंती अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस social and economic condition of India or at least of those places. Se कहउचंती
कि सती सिस्टम थिला विल डील विथ सती एक्सटेंसिवली इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जस्ट वेट फॉर द क्लास सती सिस्टम थिला एंड सेल बिक्री होतला सेल ऑफ गर्ल्स इन मार्केट प्लेसेस बाय पुअर पेरेंट्स माने ताको झियो मानु ने की मार्केट रे बिक्री होतला एंड फाइन ब्रीड ऑफ ऑक्शन बळद fine breed of auction in northwest India. Alexander was so happy. से 2 लाख का auction नहीं जाइला. I wonder केमती नहीं जाइतो. चले नहीं तो what else he can do? 2 lakh auction to Macedonia for use in Greece. Now कौन कहते historians ने कहते the art of carpentry was a flourishing craft in India. And carpenters built chariots, boats, and ships. Chariots, ratha, donga, boats and ships. Big ships were being big boats were being called as ships. Carpentry thila, auction thila, sati thila, girls are being sold in the markets thila. Jaha bhi ho, whatever might be the case, Alexander पहुंची northwestern passes पटू से छोटा छोटा प्रिंसिपालिटीज को मारी की बर्बाद कर देची एपटे मगधन एम्पायर अछि मगधन एम्पायर को चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य डिक्लाइन करी दिचंती मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हेची एपटे वेस्टर्न पार्ट रे जिंस जा चला ताको अलेक्जेंडर मारी की सफा कर देची मौर्यंस को पाई की इजी होची वेस्टर्न पार्ट को जाके ऑक्युपाई कर दो thus Mauryans will rapidly expand towards the west because the western powers were being destroyed by that of the Alexander's invasion. बुझला बुझला संयुक्ता बुझला ना नहीं जल्दी कहो अर्पित Yes, sir. So tomorrow or next class we'll see the post Mauryan Empire छाड़ी थिला होली केबे काली Yes, sir. होली रा कोन से we'll do in the next class 80% of the things which needs understanding in that of the ancient history been done गोटे पार्ट होला जोटी तुमको बुझिया को पड़िबा that is Guptas more or less rest things are factual Guptas will handle sooner next class we'll deal with that of the post Mauryans we are done with Mauryans हम गोटे पार्ट छाड़ी जेची that is the stone age should be the first class we'll deal with the stone age also see you in the next class